things. For example, if you want to like start the broadcast. Yeah, Manjari, we are live now. So first of all, on my forum of Tawari Khani, we would like to welcome really something that is very special. Usually we are going to discuss, we have done many sessions with authors and especially the esteemed guests and speakers, but they are mainly related to the heritage or the culinary aspect, culinary history of the food. We did with Pushpesh Pant, the professor, and Anubhav Sapra. But this is first time related to the food. We are bringing something like scientific or the medicinal aspect of the food. And today we have a very esteemed guest, Manjari Chandra, who is working as a functional nutritionist, wellness coach, and the author of the book. So she is also known as a founder of the Manjari Wellness, a platform that provides a holistic consultation to help the people to lead an active lifestyle. And she works as a nutritionist at Devam Wellness and offers the servicing at leading hospital of India that includes Max, Manipal, Columbia Asia, and many more hospitals and places. She has been having an experience of more than 20 years, and her contribution helped us to win many global awards. So, Women Icon of the Year also. And she appeared on various news forums such as NDTV, India Today, ZTV, and all that. So let us just go back quickly on the title of her book. That is itself very interesting. And then we will ask the first question with Manjari, Heal with Food. So magical ingredients that will change your life. So Manjari, how this title in the book came up? Thank you, Dr. Asad, for the question. The idea basically came from the fact that we were actually in a clinical setting using food to heal diseases. And when I say heal, I'm talking about changing the biochemistry of the human body, the physiology. So, food has the power to affect our bioregulatory mechanisms. And that is what we use in the clinical setting. Most people look at food as something they should be doing healthy, but they don't look at how powerful it can be and how it can actually get them out of disease also. So people look at food as a preventive methodology, that if you eat good you will not get a disease, but they don't associate it enough with treating diseases. So I really wanted to focus on that bit of food, and that is why healing your body with food sounded the most suitable title for the book, Dr. Asif. So this is the first aspect that you covered in the book, that how food is powerful in curing and preventive many of our diseases. That sometimes we undervalue the power of the food. Yes, this is one aspect. The gustatory aspect of the food is highly valued, but the healing aspect of the food, I think, is largely undervalued in our society. And Right. when you started your book with your chapter one, can you give the brief overview? आप थोड़ा सा अगर चाहें तो you can use our Hindustani language in explaining that हमारे जो खाने की choices होती हैं, how does it make impact on our life? जी. That's I So think you're the actually, part one. जी, तो पहले तो मैं ये समझाना चाह रही थी मिस्टर असद कि हम जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं। कई बार हमारा खाना जो हमारी प्लेट पे होता है वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो बहुत सारी फोर्सेस हैं जो कंट्रोल कर रही हैं। आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या मिलता है, क्या चीज़ ईजिली अवेलेबल है, क्या चीज़ थोड़ा कम पैसे में इकोनॉमिक और रीजनेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आप अच्छी वेजिटेबल्स टू अ पैकेट ऑफ चिप्स कंपेयर करेंगे तो आपको वो स्नैक कहीं सस्ता और बहुत इजीली मिल जाएगा। आप फ्रेश वेजिटेबल्स ढूंढना चाहेंगे तो शायद मुश्किल होगा और डिफिकल्ट होगा एक्सेस करना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द वे food has been advertised and put on our plate is one of the forces that is controlling what we are eating. और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो खा रहे हैं वो उनका डिसीजन नहीं है, वो कई सारी फोर्सेस कंट्रोल करे। तो पहली चीज जो मैं बताना चाह रही थी और लोगों में इनकलकेट करने की कोशिश करना चाहती हूँ वो ये कि आपका खाना आपको खुद चुनना है। आप जो खाते हैं वो क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, वो आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, वो थोड़ा इकोनॉमिकल है, इसलिए मत चूज करो। इज इट द राइट थिंग फॉर यू टू चूज, इसलिए चूज करो। क्या वो आपके पास्ट से, आपके जेनेटिक मेकअप से, आपके एंसेस्टर्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो खाते थे उससे कुछ मिलता जुलता है, तब उसको चूज करो। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग टू पीपल, दैट वाज द आइडिया ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, कि लोग ये समझे कि खाने को की चॉइसेस इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रही है, कैसे हम एक्टिवली उसको चेंज कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं मैम अगर देखें तो इन दिस टुडेज इरा डिजिटलाइज वर्ल्ड मार्केटिंग प्लेज अ बिग रोल इन द चॉइसेस व्हाट वी मेक. आज से अगर जस्ट नो नॉट गोइंग फार बैक लाइक इन गो आवर चाइल्डहुड डेज वी वर born in 80s or we can say that late 70s, and during our childhood days the food choices are not like this what today's we are making. Correct. So how do you think that the transformation and globalization, there is a lot of positive effects, but on the food choices how does it make an impact? Yeah. As you correctly said कि food security जरूर हमने कर दी है. Everybody has food. Nobody, very few people are dying of hunger. So that is something that we've been able to solve with the food choices. However, what has happened is कि कई बार लोग जिसको healthy समझते हैं वो हेल्दी होता नहीं है, बट वो परसेप्शन बिल्ड किया जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. Sure. अगर हम कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या हम कुछ स्नैक खाना चाहते हैं, नॉर्मली हम पैकेट खोल कर ही खाते हैं स्नैक. हमारा कॉन्सेप्ट स्नैक का यही हो गया है कि आप बिस्किट का या नमकीन का या सम सॉर्ट ऑफ रेडी टू ईट स्नैक खाएंगे, और हमें बोला जाता है कि इसमें फाइबर है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें ट्रांस फैट नहीं है. इस तरह की मार्केटिंग को यूज करके हमें कन्विंस कर दिया गया है कि वो हेल्दी है. बट ये मोर, एज यू करेक्टली सेड, मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है. इट इज नॉट द हेल्दी फूड दैट आई शुड बी ईटिंग और यू शुड बी ईटिंग और एनीबडी शुड बी ईटिंग. तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ग्लोबल फूड चॉइसेस का, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का. एफएमसीजी इंडस्ट्री जो इतनी वाइडली स्प्रेड हो गई, इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे खाने पे और हमारी हेल्थ पे. तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है कि ये हेल्दी है, आप उसको हेल्दी मत समझें. आप एक्चुअली अंडरस्टैंड करें कि जो म्यूजली जिसको आप हेल्दी समझ के खा रहे हैं वो एक्चुअली बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बट आपको बोलते हैं कि वो हेल्दी है, वो कंप्लीट ब्रेकफास्ट है. Ma'am, how much you see that today's era, the kids are influenced by this marketing word, and because the choices of the food what we made is, as you see, you have written a description at the start about your mother. She shaped your hobby or she shaped your career or interest towards the food research, and how you came up like a professional nutritionist and giving awareness. So this is how our mothers plays a key role in shaping up our eating habits. So what did you think that in today's generation, the kids of our generation, means our kids, they are influenced by this marketing tactics, and they are taking wrapping up of junk food with various good advertising techniques, and this is how their eating habits has been influenced from the very early stage. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, बच्चों को डायरेक्टली हम प्रोडक्ट्स और फूड सेल कर रहे हैं, नॉट जस्ट इज टेस्टी बट ऑल्सो टेलिंग देम दैट दिस इज हेल्दी, यू नो. एंड इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं यंग लोगों के. तो व्हाट दे रीड एंड व्हाट दे सी, दे बिलीव इट मोर देन व्हाट probably parents tell them. So it's difficult. Parenting has become very, very difficult now for parents of our generation and maybe the next generation, because बच्चों के पास choices इतनी ज़्यादा हैं और peer influence इतना ज़्यादा है उनके खाने पे. अब वो उतना कंट्रोल पेरेंट्स का रहा नहीं, इसीलिए. बट द गुड न्यूज़ इज मिस्टर असद कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं आजकल के. तो अगर हम उनको सही एजुकेशन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी. हम स्कूल्स के साथ एक एक्टिविटी करते थे, बहुत बेसिक एक्टिविटी, जिसमें हम छोटे बच्चे जो 5th 6th के बच्चे जो अभी इतना समझते नहीं है हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, उनको एक छोटी सी एक्टिविटी देते थे. वी यूज्ड टू गिव देम अ चेयर एंड उस पर हम रख देते थे एक कप केक, एक पेस्ट्री, 3-4 चीजें, और उनसे पूछते थे इसमें से क्या हेल्दी है. वो सब अनहेल्दी फूड होता था. तो कोई कहता था केक अनहेल्दी है, कोई कहता था बर्गर अनहेल्दी है. फिर हम उनको बताते थे बच्चे ऑल दिस फूड इज अनहेल्दी, बट सबसे अनहेल्दी है द फैक्ट दैट ये चेयर जिस पे आप दिन भर बैठे रहते हो, जिसको आपने देखा भी नहीं. तो ऐसी Exactly. चीजें बच्चों को बताना कि उनका मूवमेंट, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है, उनका परसेप्शन चेंज कर रही है. तो हमें और स्ट्रांगली इस पे स्कूल्स में आज भी अगर आप करिकुलम देखेंगे तो ये बात हो ही नहीं रही है. हेल्दी ईटिंग इज जस्ट वो छोटा सा एक मेंशन होता है, बट एक्चुअली उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे क्या है, ये सब हमें बच्चों को ज्यादा बताना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे टू काउंटर दीज फोर्सेस, जो अब मार्केट फोर्सेस एग्जिस्टिंग है मिस्टर असर.
सो दिस इज़ हाउ आई थिंक कि एक बच्चों को बहुत शुरू से फ्रॉम द स्कूल लेवल, फ्रॉम द parenting level, there is a need to create an awareness among them that what is healthy food and what is unhealthy food. Don't go only on the shape or gustatory value or advertisement value of the food. So the more and more the awareness among the parents also and the kids about the nutritional aspect of the food. That's, I think, is a very important message from your side. Yes, I'm a big advocate of spreading information, because हमें लगता है कि सबको पता है, but it's really surprising. मैं बहुत workshops करती हूँ with corporates, with schools, and I'm astonished कि इतने समझदार पढ़े लिखे लोगों को अभी भी health और nutrition के बारे में बहुत कम information है. तो I'm a big advocate of raising this in forums, talking about it in सही information with logical reasoning. क्योंकि सिर्फ बच्चों को preach करना कि आप सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ will not work. We have to reason it out to them. We have to explain the long-term impact of what they are eating on their health and also the ecology and society. तब वो ज़्यादा easily हम उनके mindset को influence कर पाएंगे. Thank you, Dr. Manji. So, if we can go to the content or the chapters of your book, like how you shape up in part one, part two, and part three, can you speak a little bit about that organization of the content inside the book itself? Then we'll go So in the micro aspect of that one. the first part of the book basically tries to explain to you how the food that you eat is controlled by a lot of things. So therefore choosing food is now your prerogative. It is no more कि जो मिल रहा है आप वो access करके खा लें. आपको कॉन्शियसली प्रोएक्टिवली अपने खाने को चूज करना पड़ेगा जो डिफरेंट हो फ्रॉम व्हाट इज इजीली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल. थोड़ा उसमें एफर्ट भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और थोड़ा सा वो कॉस्टली भी होगा, बट इट इज द कॉस्ट इज फार लेसर देन बीइंग डिजीज्ड, बीइंग अनहेल्दी. बीइंग अनहेल्दी की कॉस्ट बहुत हाई है एज कंपेयर टू चूजिंग अ लिटिल हेल्दियर फूड. तो पहला चैप्टर ये आउटलाइन करता है, पहला पार्ट. जो सेकंड पार्ट है बुक का वो गट हेल्थ पे फोकस्ड है. वो इसलिए क्योंकि जो पहले लोग बोलते थे नहीं कि अगर पेट ठीक है आपका तो सब ठीक है, पेट हमेशा साफ होना चाहिए. और वो ही इट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ आवर हेल्थ, फ्रॉम आवर न्यूरोट्रांसमिटर्स टू आवर इम्यूनिटी टू आवर hormones to our micronutrient absorption. Everything is dependent on जो भी आप खा रहे हैं वो absorb तो आपके intestines और stomach में हो रहा है. तो अगर आपका stomach और intestines, आपकी gut हेल्दी नहीं है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया थ्राइव नहीं कर रहा है, तो इवन इफ यू ईट द गुड फूड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. तो इसलिए गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कई लोगों को कांस्टेंट एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहता है और वो थोड़ा बहुत मेडिसिन खा के सोचते हैं कि, बट उनको समझना चाहिए कि ये छोटे सिम्टम्स अंडरलाइन बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेटर्स हैं. तो एनी गट हेल्थ इश्यू शुड बी राइट अवे टैकल्ड, नॉट विथ मेडिकेशन बट विथ फूड चेंजेस विच इज पॉसिबल टू डू. तो गट हेल्थ पे, और प्लस हमें पता है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ फूड्स हैं, जैसे फूड विद लाइव बैक्टीरिया जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, फूड विच Exactly. हैज सॉल्युबल फाइबर जिनको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं. ये फूड्स अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने अपने रोज के खाने में, तो वी रिप्लेनिश द गट माइक्रोबायोम, वी रिप्लेनिश गट हेल्थ. द चीज लाइनिंग ऑफ द गट कैन ऑल्सो बी restored. So इसलिए the second part is focusing on gut health, and the third part of the book basically takes us into the various forms of food categories, nuts and seeds, fruits, vegetables, millets जो हम खाना भूल चुके हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें जो इजीली इंडिया में लोग खाते थे बट अब बिल्कुल हमारे पैलेट से वैनिश हो चुकी हैं. जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लोग करौंदा खाते थे, विच इज Exactly, exactly. Karunda, फालसा karunda खाते was really a very थे. rich source of vitamin C. It can be found in the pickle, sabziyan, achar, and there are raw also it has been eaten. And I think it has a Absolutely. very highly nutritional value. एक्सेलेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू. हम बहुत सारी जमीन के नीचे जो उगती हैं सब्जियां वो खाते थे, अरबी, ये स्वीट पोटैटो, जिमी कन. अब हम वो सब खाना छोड़ दिया है हमने. देन बेरीज के नाम पे हम ब्लू बेरीज खरीद रहे हैं बहुत महंगे, बट हमारी इंडियन बेरीज है जैसे फालसा है, जामुन है. Shahid, हाँ,
और जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल सुपर न्यूट्रिशनली डेंस हैं वो हम नहीं इंक्लूड करें. देन हमारे कई सारे हर्ब्स और स्पाइसेस जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते थे वो मिसिंग हो गए हैं हमारे क्विजीन से. तो वो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू our cuisine. We have to bring it back to our plate. So the last part of the book, the third part, focuses on those ingredients जिनमें मेडिसिनल वैल्यूज बहुत होती हैं और जिनको हम अपने रोज के खाने का हिस्सा बना सकते हैं. ओके मंजरी जी, आपके पहले चैप्टर में देयर वाज सम फूड ऑफ थॉट दैट इज वेरी वंडरफुल. फूड ऑफ थॉट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट आज के दौर में मिडिल क्लास कैन अफोर्ड इट, बट वी हैव अ लार्जर चंक ऑफ आवर सोसाइटी दैट स्टिल डिडंट मेक अप even 2 times healthy eating because of their cost. So you just gave a very good comparison, food for thought. That gives an economic perspective that if the cost of the olive, almonds, or the whole milk seems to be lot, then try to imagine how do you spend on the other bad activities or breaking the bad activities such as alcohol and smoking. So just what message you would like to deliver here, or something on obesity also you talk about in that small succinct outline of your chapter. So I just want you to Yeah. repeat your message here. Yeah. So, मिस्टर असद, क्या होता है कि जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं या हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम किसी को बोलते हैं कि आप ये सब्जी खाओ या ये इस तरह के मिलेट्स खाओ जो गेहूं से थोड़े महंगे आते हैं बट उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, तो नॉर्मली जो हमें बैकलैश मिलता है या जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है वो ये कि ये तो अफोर्डेबल नहीं है, ये महंगा है, ये ईजिली अवेलेबल नहीं है. तो नॉर्मली ये, बट उसको हम बहुत इजीली हम वो रैशनल देकर साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं. बट व्हेन वी एक्चुअली कम टू वही फैमिली, अगर आप देखो तो हफ्ते में 2 बार फूड ऑर्डर भी कर रहे होंगे, बाहर भी खा रहे होंगे, शायद उनके फैमिली में कुछ लोग स्मोक करते होंगे, अल्कोहल पीते होंगे, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है. उस पर लोग माइंड नहीं करते खर्चा करना, बट गुड फूड पे क्योंकि हम एक्चुअली वैल्यू नहीं करते गुड फूड को और हम उसको डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करते हेल्थ के साथ. तो जब लोग बीमार होते हैं देन दे नो व्हाट द प्राइस ऑफ बीइंग अनहेल्दी इट इज. जब तक बीमार नहीं होते उनको लगता है कि हम क्यों एक्स्ट्रा पैसे खाने पे खर्च करें. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सिक एंड देन स्पेंडिंग ऑन ट्रीटमेंट, अगर हम प्रोएक्टिवली थोड़ा अपने खाने को और रिच बना दें और वैरायटी ऐड करें और न्यूट्रिशियस चीज़ें ऐड करें विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, दैट्स फार लेस मनी. और इस पे बहुत सारी, बाय द वे, इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल. देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट हैज बीन डन आल्सो, Exactly. जो ये दिखाती है कि डिजीज बर्डन जो होता है फाइनेंशियल, दैट इज many टाइम्स मोर देन स्पेंडिंग ऑन गुड फूड. सो ये कॉन्शियस चॉइस है जो लोगों को लेना पड़ेगा. इट इज अ बिट लाइक एजुकेशन. जैसे हम अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए तो स्पेंड करना है, बट उसका रिटर्न भी है ना, वो रिटर्न हमें मिलता है. उसी तरह जब आप गुड फूड पे स्पेंड करते हैं तो आपको हेल्थ का रिटर्न मिलता है उसके साथ. Okay, thank you. So nice to having a conversation on. Really, I'm learning a lot from your conversation today because I read your book very carefully because this book is for all of us, and I would like to recommend anybody who's going to watch, if he is interested just to know what to eat and how to eat related to your health, you need to explore your book, I think. Uh, Now, pre-cooked food. Some idea about the pre-cooked food, actually, the freshness of pre-cooked food. Would you like to share some of the tips here? सो एज अ थंब रूल जैसे बोलते हैं, anything that has been pre-cooked or processed or put in a packet and is a shelf life of more than 2 or 3 days actually is not fit for human consumption. That's the truth. Although it's not said to us, हमें बोला जाता है कि आप ये खा सकते हो, इसकी शेल्फ लाइफ तो 6 महीने तक आप इसको अपने घर में रख के खा सकते हो. I'm not talking about dals and tea. I'm talking about food. जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स हो गए या ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए या रेडी टू ईट स्नैक्स हो गए या केचप्स हो गए. रेडी टू ईट फूड मिलने लगा है, पैकेट खोल के दाल गरम करके खा सकते हो. यू डोंट हैव टू मेक दाल फ्रॉम स्क्रैच. तो ये जो प्री कुक्ड फूड है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि पहला चीज़ जो है कि खाने में वी से इट हैज़ लाइफ, प्राण होता है. जब हम कच्ची सब्जियां और फल खाते हैं तो वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग
a lot of phytochemicals, antioxidants, plant enzymes जो बिल्कुल मिसिंग है इनमें, जो पहली चीज। दूसरा, कोई भी तरह का खाना अगर उसको प्रिजर्व करना है थोड़े भी दिन, तो उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव पड़ेगा, चाहे उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट या शुगर या पुअर क्वालिटी फैट या कोई प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, ये सारी चीजें जो हम अननेसेसरी टॉक्सिन्स हैं जो अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज क्या होती है कि हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन सिस्टम होता है, वो आप तो ऑफ कोर्स अच्छे से जानते हैं, बट आजकल बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ऑटो इम्यून कंडीशंस होने लगे हैं, एलर्जीज होने लगी हैं, और उसका रीजन यही है कि हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो हमारी हिस्टामिन्स को एक्टिवेट कर रहा है, हिस्टामिन पाथवेज को। इसीलिए लोगों को बार बार कभी रैशेस हो जाते हैं, किसी को ऑटो इम्यून कंडीशंस, पहले जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे ल्यूपस या सोरियासिस बहुत कम होता था, बहुत कॉमन हो गया है, हाइव्स, अर्टिकेरिया, ये सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड खा रहे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ नहीं मैच करता। इट डज नॉट really work with the immune system, and it causes autoimmune conditions in the body. Okay. So there is a lot of reason why I and you should not be eating anything which is pre-cooked. That's great, thank you. अच्छा, मैं एक बार यहाँ पे बस थोड़ा सा I would like to ask disclaims, then we'll go in the other details. जो हमारी guidelines है how to distribute our carbohydrate, fat and protein, क्योंकि बहुत सारे misconceptions हैं लोगों को, और there was not a clarity that how much carbohydrate we have to take. कभी-कभी fat are always considered as very bad, so they think that कुछ लोग excessive dieting में चले जाते हैं. This is one problem, they just exclude the fat from the diet, and you'll talk on that. Other aspect, कुछ लोगों की एक धारणा या myth या ये है कि whatever we eat, if we are doing lot of exercises, then everything will be metabolized. So this is again one misconception, the balance between food and exercise, and how much role the food play in weighing with the exercise, because both are important, but what's the role of food in comparison to exercise? Yeah. So, if you had to look at health as a numerator and see what are the denominators that decide whether you will be healthy, उसमें कई सारी चीजें आती हैं। आपका स्लीप, आप कितने स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, आप क्या मूवमेंट और एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कितने टॉक्सिन से एक्सपोज्ड हो, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारा प्लास्टिक और अननेसेसरी टॉक्सिन्स है, और आप क्या खाते हो। ये 5 मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के डिनोमिनेटर्स होते हैं। बट अगर मैं इनको एक परसेंटेज वैल्यू दूं तो फूड बिकम्स अराउंड 60 to 80% ऑफ द स्टोरी। इसका जो मेन डिनोमिनेटर है वो खाना ही है, 60 to 80%। तो एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, no exposure to toxins or detoxing, these are also important, but they are only 20 to 30 to 40% of the story. The large story is your food, because your food is what is driving the biomolecules in the body. So therefore, कई लोग, जैसा आपने बोला कि हम तो 2 घंटे जिम जाते हैं तो हम रात को कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि सुबह हम जिम चले जाते हैं। That concept is a completely wrong concept. That's not how it works. दूसरा, कई लोगों को एक जो सॉरी टू से, बट जो गाइडलाइंस भी हमारे पास आई हैं वो भी थोड़ी गलत है। आप देखिए, जो गाइडलाइंस है वो कहती है 50 to 60% ऑफ योर फूड शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि ये बिल्कुल गलत गाइडलाइन है। जिस तरह आजकल हम अर्बन सेटिंग्स में जी रहे हैं, विद हार्डली एनी फिजिकल एक्टिविटी, विद हार्डली एनी एक्सर्शन, तो हमारी एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू की रिक्वायरमेंट बहुत 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 कम है। तो अगर मैं अपना 20% भी सिर्फ कार्ब्स खाऊं, बाकी सिर्फ सब्जियां खाऊं, तो भी ठीक है। बट जो गाइडलाइन है वो ही गलत है, बिकॉज वो गाइडलाइन ये अज्यूम करके बनी है कि आदमी कम से कम इतने घंटे एक्सरसाइज करेगा, फिजिकली एक्टिव होगा, दिन भर कार या चेयर पे नहीं बैठा रहेगा, तो वो गाइडलाइंस आउटडेटेड हो चुकी हैं, एंड इसलिए वो बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी है जिसको रिवाइज करने की जरूरत है। बट वो हुआ नहीं है क्योंकि देयर आर टू मेनी फैक्टर्स दैट प्ले इनटू दैट रिविजन ऑफ दोज गाइडलाइंस। एक आपको पता होगा, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट ऑन दिस, दैट the whole story of that fat is bad
there is an entire prelude to this कि जो फैट को हमें बताया गया था घी घी खराब है, आप फैट मत खाइए, उससे Egg कोलेस्ट्रॉल बढ़ yolk, जाता है, egg हाँ yolk. हाँ जी हाँ, एग योक, हार्ट डिजीज हो जाती है, ये सब हमें बताया इसलिए गया था क्योंकि सैडली लोग हमें शुगर बेचना चाह रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स बेचना चाह रहे थे, सो द शुगर इंडस्ट्री played a very big role in it, and there is enough documentation to show that. There are a lot of books written about it also. And fat is in fact one of the best foods for my body and for every human body, because most of our biomolecules, our hormones, our neurotransmitters, in fact 70% of my head is fat, and Exactly. कई कंट्रीज में लोगों को प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट ईटिंग इनफ गुड क्वालिटी फैट. तो हमने गलत चीज को विलेनाइज कर दिया, जबकि हमें विलेनाइज करना था शुगर्स को, सिंपल कार्ब्स को. तो वो सारी गाइडलाइंस भी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, एंड लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एंड इट्स रियली सैड कि इतना इंफॉर्मेशन है, देयर इज फ्री एक्सेस टू द इंटरनेट, बट अभी भी there is no clarity on what is right and There what is is no wrong. clarity, and sometimes internet sources are misleading also, because one who is not expert isn't able to demarcate what is correct and what is incorrect. This is also, I think, a problem. Everybody should not go directly to internet. They should seek the medical advice. They should seek the nutritional advice. That is important. And we undervalue the nutritional advice. Actually, we go for the treatment part, we go for the therapeutic part, but preventive aspect of the food, that's the point I think your book is stressed. तो अभी ये बात चल रही थी क्योंकि आपने एग्यू की बात की थी, तो बिकॉज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंक टू दैट. Cardiac diseases in India, especially, we see a large, alarming rise of the incidence due to lifestyle changes, preserved food, stress. Many factors are there, but we see many young people, unfortunately, are passing away sometime due to cardiac arrest, and the incidence is very high. On the other hand, diabetes also is going to be very high, escalating in incidence in comparison to, जब पीछे की बात करें, in comparison to last 50 years. तो यहाँ दो सवाल मेरे आपसे हैं, थोड़ा सा ऑडियंसेस के जनरल अवेयरनेस के लिए. One is what is good cholesterol and bad cholesterol to make the choices, and what is glycemic index, because you talk about many medical terms in your book. So how to glycemic index of the food, ये बहुत ज़्यादा confusion होता है लोगों को, खास तौर से जो diabetics हैं, what to eat, what not to eat, and जो heart patients हैं उनके लिए what is good cholesterol and what is bad cholesterol. Okay, एक तो पहले तो I want to be friends with cholesterol, because cholesterol is not bad for me, it's good for me. Villainizing cholesterol is like shooting the fireman. अगर आर्टरी में कहीं पर इंजरी होती है, वो इंजरी किसी भी कारण से हो सकती है, स्ट्रेस से हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकती है, स्मोकिंग से हो सकती है. अगर कहीं इंजरी है तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है, उस इंजरी को प्लग करता है जाके. इट एक्ट्स लाइक अ बैंडेड. सो द पुअर गाय इज ट्राइंग टू डाउज द फायर. It's not really trying to cause atherosclerosis, but because वो कोलेस्ट्रॉल वहां जमा होने लगता है, तो धीरे धीरे आर्टरी का ल्यूमन कम होने लगता है, एंड देन देयर इज अ चांस ऑफ हार्ट डिजीज. बट इसलिए हमें, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कोलेस्ट्रॉल, फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द थिंग्स दैट कॉज द इंजरी टू द कोरोनरी आर्टरीज, which is essentially inflammatory things: smoking, excess alcohol, antibiotics and drugs, excess stress, hypertension. These are the common reasons which cause the arterial injury to happen. So instead of only correcting cholesterol, we have to go back and first correct these causations. And the second part is, you said good and bad cholesterol. Cholesterol basically a carrier hota hai, and it carries the molecule. So we should focus on, basically we are trying to reduce the amount of freely available cholesterol, and that can be easily done by increasing fiber in your food. And that is a simple thing to do. Eating raw vegetables with every meal, or adding more low fructose fruits जिनमें ज़्यादा sugar नहीं, is a simple way of keeping your cholesterol in check. And the third thing I want to add is कि कई foods को हमने villainize कर दिया है. जैसे आपने mention किया egg yolk का, सारा nutrition egg का उस yellow yolk में ही होता है. Zinc, selenium, all the B vitamins, all the fat soluble vitamins are there. हम उसी को नहीं खाते कोलेस्ट्रॉल के डर से, जबकि वो गलत धारणा है. सो कई सारे फूड्स को भी हमने बोल दिया कि कोलेस्ट्रॉल देते हैं, तो लोग नहीं खाते हैं और उनको अवॉइड कर रहे हैं.
आपको बेसिकली 3 चीज़ें करनी है अगर हार्ट डिजीज़ के बारे में। पहला, जो कॉज़ है हार्ट डिजीज़ का उसको चेंज करिए, स्ट्रेस रिड्यूस करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करिए, एक्सरसाइज, ये एक चीज़ हो गई। देन सेकंड इज़ कोलेस्ट्रॉल को कम करने का ईजी तरीका है बहुत एक्सेस अननेसेसरी रिफाइंड फैट्स ना खाएं, गुड फैट्स खाएं, और अपनी फाइबर की मात्रा को, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ा दें खाने में। एंड द थर्ड थिंग वुड बी टू basically sort of try and eat the good foods which give you the good type of cholesterol, which is like egg yolk की बात हुई, या good quality high fat चीज़ है या पनीर है, इस तरह की चीज़ें जो हमें बहुत न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है हेल्दी फैट के साथ साथ। थैंक यू फॉर द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेलेक्टिंग द फूड विद द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि ये आजकल के ज़माने में एवरी थर्ड पर्सन इज डायबिटिक एंड पीपल डोंट हैव अवेयरनेस व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड व्हाट टू चूज स्पेशली इन डायबिटीज, and how does glycemic index affect your HbA1c values or whatever the outcomes of your diabetes. करेक्ट। सो हम क्या कार्ब्स को ना एक ही ब्लैंकेट में डाल देते हैं कि एवरीथिंग दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट विल हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन ब्लड शुगर, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं, जैसे सपोज मैंने एक सफ़ेद चावल खाया एज कंपेयर टू स्वीट पोटैटो खाया, बॉइल्ड स्वीट, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट वो सफ़ेद चावल इमीडिएटली शुगर में कन्वर्टेड, बिकॉज वो स्टार्च होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब मैं स्वीट पोटैटो खाती हूँ, बॉइल्ड स्पेशली, तो वो स्वीट पोटैटो में एक तो वो सिंपल स्टार्चेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो बहुत टाइम लगता है उसको शुगर बनने में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आप जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कितनी शुगर या कितने ग्लूकोज बनाता है आपके शरीर में, और कितनी क्विकली कन्वर्ट हो जाता है, हाउ क्विकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल the thing with the lowest glycemic index would be table sugar या glucose, and white bread, brown bread, white rice, मैदा, ये सब बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। वेरएज मिलेट्स जैसे कि रागी, जवार, अमरांत, फल जिनमें कम चीनी होती है जैसे कि पपाया, कुछ हरा मेलन, ग्रीन एप्पल, बेरीज, इनमें शुगर है पर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसी तरह से अनपॉलिश्ड राइस जैसे कि रेड राइस, ब्लैक राइस, या फिर चीज़ें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है जैसे होल बीन्स, लेंटिल्स, ये इनमें भी कार्ब्स है, बट ये इमीडिएटली शुगर को बढ़ाते नहीं है शरीर में, तो हम बोलते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और जो चीज़ें इमीडिएटली शुगर में कन्वर्ट होती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। वी हैव टू बेसिकली अवॉइड द फूड्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बिकॉज जो डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी है उसमें यही होता है कि जितना शुगर या ग्लूकोज शरीर में होगा उतना ही इंसुलिन स्पाइक होगा, Exactly. एंड इंसुलिन जितना स्पाइक होगा उतना ही आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कम करेंगे तो आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, जितना हाइपर इंसुलिनीमिया कम होगा उतना ही आपका यू आर प्रिवेंटिंग द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। So in that case, selecting the food that has a slow absorption of the sugar, that I think the basic mantra of this. The more complex is a carbohydrate, the more better. The slow absorption from your guts, the less spikes in your blood sugar level, and that could be good. Even a small amount of a melons doesn't affect you. But the people have a sometimes misconception that everything that is sweet, everything that has a sugar or carbohydrate is bad, but that's not the case. Okay. In a small So amounts, there is an entire list of foods, जो जिनको हम bracket करके, we can put them into high and low glycemic index foods, and so then there is an easy choice to make. As you correctly said, fruit में क्या होता है, बहुत सारा fiber भी होता है, pulp भी होता है, skin भी होती है, so that reduces the glycemic index of the food. exactly. So therefore fruit is a Plain better sugars or choice. candies, definitely they are harmful if you are taking the candies or the plain sugars. But if you come on the fruits, that's more complex than the natural carbohydrates. Okay. Achha, ma'am, just quickly, because the other condition came in my mind and related to your topic, there is a lot of thyroid patients, and it's a metabolic disorder, and sometimes they get very frustrated because they start different dieting maneuver,
and that didn't work in reducing weight. Even exercise didn't work in reducing weights. So how do you think, give a tip for a thyroid patient, so what to eat in nutshell, just quickly, in the Yeah, terms of sure. nutritional value? So thyroid is very widespread, as you said. In fact, the आंकड़े बताते हैं कि एक में से 4 लोग हाइपोथायरॉयड Char. है इंडिया में इस समय. सॉरी, 4 में से एक, आई एम सो सॉरी, 4 Yeah, में से एक में हाइपोथायरॉयड है. बेसिकली क्या हो रहा है कि थायराइड का फंक्शन सब ऑप्टिमल हो गया है. वो इसलिए हो गया है क्योंकि थायराइड हार्मोन्स T3 T4 बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम खा नहीं रहे. वो है सेलेनियम, जिंक, आयोडीन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, अमाइनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन, arginine. ये हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमारा खाना डिप्लीटेड हो गया है. जब हम पॉलिश दाल या सफ़ेद चावल या सफ़ेद आटा खाते हैं तो ये जितनी भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो उसमें रह नहीं जाते. वो नहीं रह जाते तो हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. और थायराइड हार्मोन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो कई लोग फॉर एग्जांपल आयोडीन डेफिशिएंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है और वो थायराइड की पिल खा रहे होते हैं. अगर हम अपना आयोडीन, सेलेनियम, जिंक ये करेक्ट कर लें बाय जस्ट ईटिंग नाउ सम ऑफ द गुड sources would be nuts and seeds. If you can eat a sufficient amount of nuts and seeds, almost all these minerals and vitamins that I spoke will about be replenished. जो, और वो भी हम लोकल नट्स एंड सीड्स खाएं जो इंडिया में होते हैं, जैसे काजू है, अखरोट है, या चिलगोजा है विच इज कॉल्ड पाइन नट, या जो सीड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स है, या पंपकिन सीड्स है, Sunflower. मेलन, sunflower, sesame. ये actually they are full of these micronutrients. So thyroid patient के लिए one pro tip would be कि अपना salt बदल के white salt से natural salt कर दें, like pink salt या sea salt या rock salt, और दूसरा seeds और nuts खाने लगे तो अपने आप उनका nutrients correct हो जाएगा. That's great. Thank you. Ma'am, because the next question was coming in sequence, आपने thyroid की बात की और मेरा अगला सवाल था micronutrients. So, what's the value of micronutrients for general masses? क्या इसकी value है? लोगों को इन चीज़ समझ नहीं आती micronutrients exactly. How does they play a very large role in comparison, in collaboration with macronutrient? I would like to say. बहुत बहुत बड़ा रोल है. ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ इंडियंस आर लो ऑन विटामिन D3. एक जो बेसिक विटामिन है विटामिन D3 जो सीधे सूरज से मिल जाता है, आपको कुछ करना भी नहीं, सिर्फ धूप थोड़ी सी लगने देनी है खुद को. बट हम वो भी नहीं करते. हम घर के अंदर ज़्यादातर रहते हैं, ऑफिस में या गाड़ियों में, तो हमें धूप नहीं लग रही है, तो विटामिन D कम है शरीर में. नाउ दैट विटामिन D makes a hormone called testosterone, which is required for normal muscle to be formed. Androgenic hormone है. अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपके कई सारे हार्मोन्स बराबर से नहीं बनते, न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनते. इसी तरह कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि फॉलिक एसिड है या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो आपकी ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है. तो आपको, जिन लोगों को जल्दी भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, फटीग हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, उनको कई बार बी विटामिन, फॉलिक एसिड की कमी होती है. तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डायरेक्ट रोल होता है हमारी हेल्थ में. एंड सिम्टोमेटिक भी होते हैं. आप अपने सिम्टम से भी पता लगा सकते हैं कि किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपको कमी है. तो इसलिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिम्टम है, आपको हेयर फॉल है, आपको फटीग है, आपकी स्किन बहुत ड्राई है, आपको भूख नहीं लग रही है, you must understand that this could just be a micronutrient deficiency, which is minerals and vitamins. तो अगर आप more nutritious food खा लेंगे और processed food नहीं खाएंगे तो the chances are that most of it can be taken care. मैम एक और सवाल यहाँ पे आ गया, बेसिकली दैट्स रिलेटेड टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो गोइंग वन बाय वन. सो आपने एक बहुत अच्छा अंडरलाइंग फैक्टर फूड का, दैट्स फूड एंड रिलेटेड टू मूड डिसऑर्डर्स. तो कभी-कभी हमारे खाने का, डाइट एज एन एंटी डिप्रेसेंट, दिस प्लेज अ रोल, दिस इज आल्सो वेरी अंडरवैल्यूड पार्ट. तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो अगेन as you said, diet is an antidepressant, food is an antidepressant. अगर आप एक मॉडर्न सिनेरियो में इसको ले, बहुत सारे यंग बच्चों को आज डिप्रेशन है, बहुत कॉमन हो गया है एज कम्पेयर टू अ जनरेशन और टू बिफोर दैट. तो इसके रीज़न कई हैं. ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल्स हायर हैं, आई अंडरस्टैंड,
बट एक रीजन ये भी है कि many children today are malnourished in terms of micronutrients. उनको enough vitamins minerals नहीं है उनके शरीर में, and when they're low on these or deficient on these, then their neurotransmitters which should be formed are not formed properly. We also note that neurotransmitters are formed in the gut, 70 to 80% of them. There's actually a nerve called the vagus nerve which connects the gut to the brain. It's called the gut brain axis. और अगर आपका स्टमक में से प्रॉपरली गट माइक्रोबायोम पुअर है, B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो then that gut brain axis literally snaps. So you don't Exactly. have enough neurotransmitters. So what you're experiencing in your stomach, you will also experience in your head. You'll feel low on energy, depressed, not excited, not ecstatic, you know. And it's a vicious cycle. होता क्या है कि जब लोगों को ऐसा फील होता है, तो instead of correcting their food, they try to have alcohol or smoke to make them happier, which is even worse. तो वो और उसको खराब कर देता है. So you get into that vicious cycle. जितनी बार आप low feel करते हो, you want to smoke a cigarette or you want to, have something which makes it even worse, instead of going back and correcting the deficiencies that your body has. I think you're muted. I think Sorry, you're sorry. muted. Yes, yes, ma'am. Coming on the next part, you are talk lot about probiotics and taking care of our colon and the commensal bacteria. तो आपने वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल हमारी जो पुरानी रीति रिवाजों वाले खानों का कुछ जिक्र किया है जो हमारे पास पहले से थी, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ आवर गट एंड स्लोली आई थिंक दीज हैबिट्स नीड टू बी प्रिजर्व रेदर देन टू बी एक्सटिंक्ट. तो उसके Yeah. बारे में कुछ बताएंगी उन रेसिपीज के बारे में, फर्स्ट अबाउट द प्रोबायोटिक एंड गट एंड देन गोज ऑन दैट ट्रेडिशनल डिशेस दैट यू मेंशन इन योर बुक. गट हेल्थ के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए. पहला, प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स मतलब एनी फूड विच हैज लाइव बैक्टीरिया इन इट, विच हैज थ्राइविंग बैक्टीरिया. तो हमारे घर में जो हम दही सेट करते थे, होम कट सेट कर्ड, नॉट पैस्चराइज्ड कर्ड. जो डब्बों में आता है पैस्चराइज्ड वो नहीं, जो घर में आप लाइव बैक्टीरिया से कर्ड सेट करते हैं वो. जो हम अपने घरों में अचार बनाते थे सीजनल, जो हम फर्मेंट करके, जैसे शलगम का बना लिया, या वी यूज्ड टू मेक जो 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 भी वेजिटेबल सीजन में है, लौकी है या कॉलीफ्लावर है, बीन्स है, इवन लेमन का पिकल, ये सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं बिकॉज इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं. देन इन इंडिया देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक दैट वाज कंज्यूम, जैसे कांजी, sirka. These were things that we were making at home. Even things like जिसको विनेगर बोलते हैं आजकल लोग, एप्पल साइडर विनेगर बोलते हैं. हाँ, ये सब हम घर, प्लस फर्मेंटेड चटनी, जैसे कि कोकम की चटनी या फिर फ्लैक्सीड की चटनी, ये सब चीजें हम हमारे कल्चरल पार्ट, क्यूजिंग का पार्ट थी. तो प्रोबायोटिक इज वन पार्ट. अगर ये सब आप नहीं भी कर पाते तो आजकल और भी प्रोबायोटिक्स, जैसे हम बोलते हैं किमची, कफिर, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत कॉमन है, वो भी खा सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी होती है प्रीबायोटिक्स. तो गट बैक्टीरिया को फीड करना पड़ता है. उनको फीड करने के लिए आपको वो फूड खाना है जिसमें सॉल्युबल फाइबर हो. और वो कहाँ से मिलता है? खड़ी दालें, मोटा अनाज, फल, सब्जियां. इनसे आपको वो फाइबर मिलता है जिसको हम प्रीबायोटिक फाइबर बोलते हैं. जैसे जितनी भी लीक्स हैं, जितनी भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, उनमें ये बहुत होता है. तो वो आप खाएं. स्पिनच, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, प्लस खड़ी दालें, मोटा अनाज, पॉलिश्ड नहीं खाएं जब भी खाएं. तो यू ईटिंग प्रीबायोटिक्स. और एक थर्ड कैटेगरी जो कई लोगों को पता ही नहीं गट हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो है गुड फैट्स, जिनको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं, जो कि जैसे ब्यूटायरेट है. इस तरह के कुछ फैट्स होते हैं जिनमें गट माइक्रोबायोम थ्राइव करता है. वो फैट्स मिलते हैं आपको होममेड घी, जो गाय का घी होता है. कोकोनट ऑयल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इट, नारियल का तेल. कच्चा कच्चा मस्टर्ड ऑयल. कच्चा मतलब जो जिसको बिना उबाले, जिसको कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं, कोल्ड प्रेस करके जो बनाया गया है. देन ऑलिव ऑयल. तो ये प्लस जो हम घर में सफेद मक्खन बनाते हैं, व्हाइट बटर, these are all, they all contain something called medium chain triglycerides and short chain fatty acids. These fats
allow the gut to become much healthier because they replenish the gut microbiome. तो और हमने घी खाना छोड़ दिया, हम चीज खा रहे हैं, प्रोसेस्ड बटर खा रहे हैं, बट जो गुड फैट्स थे वी हैव टू गेट बैक टू देम. Acha, that's one very good point came in my mind because many people are now thinking about the value of the oil. So olive oil is now getting more popular in our culture. Actually, it was not before. It was not a part of it. तो वो कैसे लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है डीप फ्राइंग इन ओलिव ऑयल हाउ कुड बी डेंजरस. तो ये जो अवेयरनेस है दैट So विच टाइप ऑफ ऑयल इज यूज्ड फॉर डीप फ्राइंग और उनके क्या साइड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स दैट कैन बी हार्मफुल और that can be used as a dressings or in salad that is more better. So what's your view on that? Because cooking practices sometimes alter the value of the oil. करेक्ट. सो ऑलिव ऑयल एक्चुअली जब आप जहाँ से वो आया है मेडिटेरेनियन यूरोप से, जहाँ पे ऑलिव ऑयल एक्चुअली यूज होता था ट्रेडिशनली. ऑलिव ऑयल ऑब्वियसली अच्छा है, नॉट सेइंग अच्छा नहीं, बट अगर इंडियंस को यूज करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑलिव ऑयल इज नॉट यूज टू फ्राई पूरीज, दैट्स नॉट व्हाट इट इज ऑलिव मेंट ऑयल में फॉर. पकौड़ियाँ नहीं तलना है मतलब वही समोसे और सब उसमें पकौड़ियाँ. ऑफकोर्स उसका स्मोकिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता कि आप उसको फ्लेम कर सके, फिर वो डीनेचर हो Exactly. जाता है. ऑलिव Exactly. ऑयल इज सपोज इज ट्रेडिशनली ऑल्सो यूज्ड फॉर कोल्ड कुकिंग, सूप के ऊपर डाल दिया, सैलेड के ऊपर डाल दिया, उस तरह आप ले सकते हैं. या आपको हल्का कुछ सॉटे करना है बहुत थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, आपको कोई ब्रिंजल को तवे पे सॉटे करना है तब आप, लेकिन आप उसको कुकिंग के लिए जहाँ पे आप उसको स्मोक कर रहे हैं आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट एन ऑयल विच कैन बी स्मोक्ड. It came usually from Middle Eastern, North African, and Mediterranean type of diets. So Eastern Europe, we could say, or the Mediterranean part of North Africa and Middle Eastern. So where cooking practices are different from our Indian culture. So usually there it is a part of a household cooking, but we cannot use it for the deep frying. Exactly, that's the point we need to understand. Yeah, so what has happened, this is a very good point, Mr. Asad, because a lot of people have now believed that olive oil is good. तो वो क्या करें, अब as you correctly said, अपने पापड़, पूड़ी, पकौड़ी सब olive oil में फ्राई करें, thinking कि उन्होंने healthier oil खा लिया, which is absolutely incorrect because olive oil is not supposed to be heated. It is used for cold cooking and that is the property of the oil itself. What you If can use what you can use for cooking, actually frying is not a good way of eating food to start with. exactly. And there are a lot of people around the world who say you should throw your frying pan away. That's the first thing you should do. But अगर आपको करना भी है कभी कोई चीज को तेज आंच में तेल को बहुत गर्म ही करना है तो द बेस्ट फैट वुड बी घी या मस्टर्ड ऑयल. और अगर आप यू बिलोंग टू ऐसी जगह जहाँ तिल का तेल या नारियल का तेल खाया जाता है तो these are the 3-4 fats which you can occasionally use for frying. But frying generally is not a good way of eating Not fat. a good way of cooking. अगर आपको Act- सब्जी वगैरह करना है जैसे आपने बताया, you can just do the saute just on a low temperature. You can just Actually अगर आप ध्यान करें पहले लोग घी कैसे खाते थे, उसमें पकाते नहीं थे, घी को डालते थे, कच्चा घी कटोरी में रखते थे अपने खाने के साथ और उसको ऊपर से. दाल में और ऊपर से रोटी पे डालते. दैट इज द राइट वे ऑफ ईटिंग That's फैट right. विदाउट कुकिंग टू मच. अगर इंडियन स्टाइल की सब्जी वगैरह बनाना भी है ओलिव ऑयल में तो सुपरफिशियल कुकिंग दे कैन डू इट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट डीप फ्राइंग और सॉर्ट ऑफ थिंग्स Correct. Sauteing very quickly can be done. very quickly so that it will not denature. Correct. अच्छा, बिकॉज द वी आर गोइंग क्लोज टू आवर टाइम, पता नहीं चला आपसे इस कन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग थी. देयर इज 15 मिनट्स पास, सो आई थिंक 55 minutes is enough for any session. So just quickly we like to say magical ingredients तो main component था आपकी book के title का. What about the magical ingredients that you want to deliver I want information to, on them? मैं आपको कुछ आज 5 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स दूंगी जो आपको इस समर में आप जरूर खा लो अगर आपने पिछली गर्मियों में नहीं खाए हैं, जो Okay. सीजनल है. पहली चीज कच्चा आम, जो हरा आम होता है उसका आप पना बना लो, चटनी बना लो, जो भी बनाना है, बट जरूर खाओ. इट हैज सीरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन इट. Okay. आमला जिसको गूसबेरी कहते हैं, लोग ब्लूबेरी खरीद रहे हैं और इतनी महंगी, आपका लोकल आमला जो बहुत चीप है और बहुत इजीली अवेलेबल है उसको आप लीजिए. अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आमले का सिर्फ जूस बना के पी लीजिए उसको. अगर नहीं तो आप आमले की चटनी बना सकते हैं, आमले का अचार बना सकते हैं, आमले को आप अपनी कुकिंग में यूज कर सकते हैं. सो दैट्स सेकंड. थर्ड इज जामुन. जामुन विच इज ऑल्सो द इंडियन ब्लैकबेरी.
is known for its oral hypoglycemic properties. It Exactly. reduces the instance of high blood sugars and many more. उसमें कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कहीं पाए ही नहीं जाते, जैसे Many वो Ayurvedic formulas used it for the diabetic patients also. उसकी गुठली में भी कुछ ऐसी properties होती हैं. They used to make some sort of powders that work on as a hypoglycemic जामुन का agent. और करेले का पाउडर बनता है, तो जामुन अभी सीजन में बहुत आएगा और बहुत सस्ता मिलता है, एंड इट्स वेरी टेस्टी. सो दैट्स वन फ्रूट यू शुड ईट. द फोर्थ थिंग दैट यू शुड ईट इज समथिंग कॉल्ड बेल. आई डोंट नो आपने कभी सुना है कि नहीं, स्टोन फ्रूट कहते हैं हम उसको. बेल एक बड़ा सा Yes, yes, फल, हाँ. yes. उसके अंदर एक Wood apple, ऑरेंज, what we used to wood apple in English. वुड एप्पल, अंदर से ऑरेंज पल्प होता है, येलो ऑरेंज पल्प. Yeah. वो भी न्यूट्रिशनली डेंस, हर तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें है, फाइटोकेमिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स And हैं, rich in fibers. रिच इन फाइबर, प्लस ग्रेट फॉर योर गट, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है वो. Exactly. And then the fifth, so I'm just pointing out to five things today. And the fifth thing I would insist is अपने घर में खुद घी बना के खाएं. Any ghee that you buy from outside can never compare to making the ghee at home. So अगर possible है तो अपने घर में उसको, मलाई को जमा करके make curd and then make ghee out of it. It's extremely good for your health, and it is multiple properties in every sphere that we know of. So I think ये 5 चीजें, and there are many more, but इस गर्मी में आप इतना तो please करो, कच्चा Thank you. आम Thank खाओ, you. आंवला खाओ. And I Exactly. want to, Mr. Asad, before we finish, I just want to say one thing which we've Sure, not sure, sure. discussed. Sure. One of the main things about eating, which people forget, is fasting, which is Mm. also an extremely important thing. आप किसी भी culture या religion में भी देखिए, fasting was a part of our, religions and Exactly. culture. In Hinduism, in Islam, and many other cultures, there is a different तो sort of एक ways of जो fasting. बहुत बड़ा टूल हम मिस कर रहे हैं हेल्थ में, वो है फास्टिंग. हर वक्त मत खाइए, अपने शरीर को एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स की रेगुलर फास्टिंग दीजिए. वीक में एक बार ड्राई फास्टिंग करिए या वाटर फास्टिंग करिए, या दिन में एक बार खाइए. ये चीजें जो कल्चरली थी, यू हैव टू अडॉप्ट फास्टिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू रीसेट योर मेटाबॉलिज्म. तो And दैट वाज, self-detoxifying. so I just wanted to say that before we Role finish. of fasting. Anything else you want to add? There is a lot to talk in the book. I think herb and spices we missed because there is a whole chapter and a discussion on that. Beverages, you discuss part of it in a magical food. So, any take-home message you would like to say if anybody wants to read your book? What you would like to say as a take-home message for the My readers? take home message is actually very simple. It is, you know, one is do not eat less. I actually use this line a lot. Eat less often. बार बार मत खाइए, 2 या 3 बारी खाइए, फास्ट करिए. मोस्टली प्लांट्स एंड लाइव फूड, बस इतना सा आप करिए. जितना हो सके प्लांट्स खाइए, कम बार खाइए, और होममेड खाइए. ये 3 चीज़ें अगर हम कर लें तो बहुत सारी चेंजेस हम बहुत ला सारी सकते चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें. Many thanks, Manjari, for having such a wonderful and I think knowledgeable session. We learned a lot, and hopefully, those who didn't read this book, if you love the value of the food, please take a look on her book that has been published by Rupa Publication. Thank you, Manjari. Would like to end the session here. हैं. Thank you. Thank you. It's very kind of you to have me over, Mr. Asad. Really, Thank that's you. just pleasure is mine. All pleasure is mine to invite you here and just having conversation here. Thank you. Okay. Good